सदस्यगण, अभी प्रश्नकाल है। प्रश्नकाल के अंदर सभी मान्य सदस्यों के जो प्रश्न होते हैं उनको बोलने का अवसर दिया जाता है और ये महत्वपूर्ण और सरकार की जिम्मेदारी भी होती है। इसलिए मेरा आग्रह है, प्रश्नकाल के बाद मैं जिन विषयों पर आपने नोटिस दिया है उन विषयों पर मैं चर्चा कराने को तैयार हूँ। जितनी देर, जितने समय आप चर्चा करना चाहेंगे, उपयुक्त समय आपको चर्चा के लिए मिलेगा, लेकिन चर्चा प्रश्नकाल के बाद ही होती है। अगर आप सदन में चर्चा करना चाहते हैं तो आप नोटिस दीजिए, मैं प्रश्नकाल के बाद आपको चर्चा करना की अनुमति प्रदान करने के लिए तैयार हूं। आप अगर सदन नियोजित तरीके से नहीं चलाना चाहते, सदन की मर्यादा को नहीं बनाना चाहते, तो सदन की कार्रवाई नहीं चलेगी। सदन आज 12 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है। That India has achieved a significant milestone, a historical milestone with the commencement of operations of the country's first indigenously developed hydrogen power train, Namo Green Rail. On the Jind-Sonipat section of the Northern Railway in Haryana, the 10-coach train marks a major step towards clean, sustainable and technologically advanced rail transportation. The House congratulates the Honorable Prime Minister Shriman Narendra Modi ji, the Honorable Minister of Railways, the ministers, the officers and the staff of the Ministry of Railways, Indian Railways, and all the scientists, engineers, technicians and others whose dedication and hard work have made this pioneering venture a big success. I am confident that this achievement will further strengthen India's journey towards sustainable green mobility and alternative green energy for betterment of humanity. Let me complete all this. I am coming back to you. I am telling I am coming back to you. Papers to be laid on the table. Shriman Nityanand Rai. सभापति महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यावली के क्रमांक Nothing will go on record except मेरे नाम के सम्मुख उल्लेखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूँ। श्रीमान पीएल वर्मा जी, आदरणीय सभापति महोदय, I am coming back to you. Please take your seat. Honorable member, please take your seat. I am coming back to you. Please. आपकी अनुमति से आज राज्यसभा की संशोधित कार्य सूची के श्रीमान पीएल वर्मा जी, अपने नाम के सम्मुख अंकित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ। श्रीमान बंडी संजय कुमार जी, मैं आज की पुनर्निश्चित कार्यसूची में क्रम संख्या 1C पर मेरे नाम के सम्मुख के लिए दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूँ। श्रीमान सुगंध मजूमदार जी, Chairman sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number D in today's revised list of business. श्रीमान हर्ष मल्होत्रा जी, Honorable Chairman sir, with your permission, I rise to lay papers mentioned against my name at serial number 1E of the revised list of business. Thank you. messages from Lok Sabha Secretary General. Sir, with your kind permission, I rise to report that Lok Sabha at its sitting held on 21st July 2026 adopted the following 3 motions recommending to the Rajya Sabha that Rajya Sabha do agree: 1. To nominate 1 member from Rajya Sabha to associate with the Committee on Public Accounts for the unexpired portion of the term of the committee, Vice Shri Sukhendu Shekhar Rai, resigned from Rajya Sabha with effect from 8th June 2026. 2. To nominate 1 member from Rajya Sabha to associate with the Committee on Public Undertakings for the unexpired portion of the term of the committee, Vice Shri Devashish Samant Rai, resigned from Rajya Sabha with effect from 25th May 2026. And 3. To elect 10 members amongst the members of
from Rajya Sabha to associate with the Committee on Welfare of Other Backward Classes for the term of 1 year beginning from the date of the first sitting of the committee, and do communicate to the Lok Sabha the names of members so nominated or elected by the Rajya Sabha. Reports of the Public Accounts Committee, Shriman Akhilesh Prasad Singh ji. Versions of 48th, 49th, 58th and 51st reports of the Public Accounts Committee 2026-27 as listed against my name in today's list of business at serial number 2. Reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Coal, Mines and Steel, Shriman Anil Kumar Yadav Mandadi ji. Sir, I rise to lay on the table a copy each in Hindi and English of 24th, 25th and 26th reports of department related to Parliamentary Standing Committee on Coal, Mines and Steel as listed against my name in today's list of business. Statement by Minister. Statement by Minister Professor S.P. Singh Baghel ji. सभापति महोदय, मैं आज राज्यसभा की संशोधित सूची में क्रम संख्या 4 पर मेरे नाम के आगे प्रपत्र जो वक्तव्य है सूचीबद्ध वो सदन के पटल पर रखता हूं। Motion for elections of members of Rajya Sabha to the Committee on Official Language, Shriman Nityanand Rai ji, to move a motion for election of 5 members to the Committee on Official Language. सभापति महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि राज्यसभा अधिनियम 1963 का 19 की धारा 4 की उपधारा 2 के अनुसरण में यह सभा उस रीति से जैसा कि सभापति महोदय निर्देश दे राज्यसभा समिति में विद्यमान रिक्तियों को भरने के लिए सभा के सदस्यों में से 5 सदस्यों को उक्त समिति का सदस्य होने के लिए निर्वाचित करने की कार्यवाही करें। Motion moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. सर, I am coming back to you. हमने ये सवाल उठाया है कि सोमवार को छात्रों के खिलाफ जिस तरह लाठीचार्ज और हिंसा की गई है उससे मेरा मन लाठीचार्ज अत्यंत House will meet at और 12 noon today. The House will meet at 12 noon today.